Yes, dear students, welcome to all of you once again in new session. If you remember, in last session we discussed some important numericals on combination of registers. Okay, and these numericals are important for all board exams, and I'm sure all of you must have enjoyed. And एक क्वेश्चन हमने आपको दिया था लास्ट में कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना था अक्रॉस रजिस्टर R1, R2, R3 एंड R4. ओके, करंट हम लोगों ने उसमें फाइंड कर लिया था. And I'm sure most of you must have done that numerical also. So we shall be starting with the session with the same numericals और उसमें find करेंगे हम potential difference across each register. And you will find that this numerical is very important and बहुत interesting numerical है. ठीक है, और request हमारा continuously यही रहेगा कि continue to learn and do earn money and earn respect and do earn some good points from God also by serving the environment. By serving the environment means by saving the environment, not polluting this mother earth. So thanks to all of you. Now let's start the session. Yes, in previous session we solved some numerical based on combination of registers, and I'm sure that you must have enjoyed these questions in previous session. प्रीवियस सेशन में हमने एक क्वेश्चन जो हम कर रहे थे लास्ट में, उसके दो पार्ट्स हमारे सॉल्व हुए थे एंड दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन बोर्ड एग्जाम. उसमें हमने थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, ये जो थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रिक करंट इन ईच रजिस्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, दीस टू पार्ट्स हैव बीन एडेड बाय मी. ये दोनों पार्ट हमने इस क्वेश्चन में ऐड कर दिए हैं ना. तो दिस पे 4 क्वेश्चंस बन गए, एक क्वेश्चंस के 4 पार्ट्स बन गए. So we found the current, electric current in each resistor in last session. तो इसको हम दोबारा से कर लेते हैं. And I asked you to solve the numerical, means to find the potential difference across each resistor at home. हमने बोला था कि घर पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे. And I am sure most of you must have done. बहुत से बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी. Because when you do on your own, you learn more. You learn more. And these are knowledge based question. आपने knowledge पहले gain कर लिए. Now you are applying the knowledge in numericals, है ना. Knowledge gained is being applied. तो इसको दोबारा से शुरू कर लेते हैं करंट से. तो देखिए इसमें resistors R1 is 10, R2 is 20 and R3 is 5, R4 is 25 ohm. तो इसको शॉर्ट में हम शुरू करते हैं and big part हम पूरा करेंगे. So here RS, in first case it will be equal to R1 plus R2 and it will be equal to 10 ohm. Here it is 10 plus 20 is equal to 30 ohm. And this is RS1. The first case है RS1 ले लिया हमने इसको ना. And here it is 30 ohm. So therefore electric current I1, because total current हमने find किया था कि 1.6 एम्पियर है. Now 1.6 एम्पियर करंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. कुछ करंट इसका R1 और R2 में जाएगा और कुछ करंट I2, R3 एंड R4 में जाएगा, है ना, बिकॉज इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो हियर यू कैन सी डायरेक्शन इज गिवन. तो दो डायरेक्शन में करंट जा रहा है. तो I1 V इज इक्वल टू V अपॉन R S1 आएगा. V is 24 and here it is 30. So when we solve it, what do we get? We get 0.8 ampere current. So 1.6 ampere का 0.8 ampere जा रहा है R1 और R2 में. So here it is I1 is equal to 0.8 ampere. So same way we can find out here RS2 because these two are in series. तो यहाँ पर आ जाएगा RS2 is equal to R3 plus R4. And it is equal to 5 plus 25 is equal to 30 ohm. Any problem here? So now I2 कितना होगा? Find I2. I2 find करिए. Yes. So I2 कितना होगा? I2 is equal to V upon RS2 and it is 24 upon again 30. Again what do we get here? Yes, 0.8. तो देखिए because combination of these two is 30 here. Equivalent resistance is 30. Here also equivalent resistance is 30. So therefore 1.6 ampere current is divided into two equal parts, 0.8 ampere
और इसमें भी कितना आएगा, I2 is 0.8 एम्पियर। यस, अगर हम रेजिस्टर्स को यहाँ पर चेंज कर दें, यहाँ पर 10 की जगह अगेन हम 40 करते हैं, देन करंट विल चेंज। वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम हियर? So now we have to get the potential difference in each resistor. Means potential difference across R1, potential difference across R2, potential difference across R3 and R4. ठीक है? And total potential difference applied across this is 24 because these two are in parallel. This we know. Okay? So now second part. So note down. Now we find the potential difference across each resistor. Now first we shall find the potential difference across R1, okay, and then R2. And R1 and R2, these two are in series combination. So therefore potential difference, what do you think? Across R1 and R2 will be same or different? Yes, right? It is different because in series combination, total potential difference, it is divided into, yes, according to the number of resistors. जितने resistors होंगे उतने ही potential difference पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सो फाइंड करेंगे R1 में। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V1, इट इज इक्वल टू हाउ मच, I R1, एंड I1 करंट इज हाउ मच, करंट इज 0.8, so therefore V1 will be equal to 0.8 into R1 is 10, so मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज 8 वोल्ट, दिस इज 8 वोल्ट। Now you will see, it's very interesting numerical. You will find that now इसका कितना आता है, फिर दोनों का सम देखेंगे कितना आता है, no? So now second part here, potential difference. Some of you should do on yes or your on notebook or your on in the notebook. अपने आप करें इनको. So potential difference V2 across R2 क्या होगा हमारा, दिस इज V2 इक्वल टू सेम वे, इट इज नाउ I1, करंट सेम रहेगा बिकॉज इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो करंट इज सेम, I1 सेम रहेगा 0.8 एंड 0.8, है ना? तो यहां हो जाएगा आपका 0.8 into R2 is 20 and here it is how much, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, दिस इज 16 वोल्ट। तो यू कैन सी हियर द सम ऑफ दीज टू, 8 वोल्ट एंड 16 वोल्ट कितना आता है, दिस इज हाउ मच, 24, so this is 8 volt here and here it is 16 volt and the total potential difference is 24 volt, so sum of these 8 volt and 16 volt is how much, 24 volt again। तो यहां पे देखिए V1 आ गया हमारा 8 वोल्ट and here V2 is 16 volt and the sum of these two is equal to 24 volt। Yes, this is very important point to understand here। Yes, now same way we can find out the potential difference across R3 and R4 also। तो now note down, अब आगे चलते हैं इसको। Now potential difference across R3, it is how much, V3 होगा ये, and here current is now I2 करंट लेंगे because current जो है इसमें I2 पर जा रहा है, okay, and this is how much, 0.8, so this is I2 into R3 and here it is equal to 0.8 into 5 and it comes out to be 4 volt। तो देखिए R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज कितना आया हमारा, 4 वोल्ट, दिस इज हियर 4 वोल्ट, तो V3 is 4 volt। Now try to find out potential difference across R4, hurry up। So now potential difference across R4। Yes, some of you have started writing answer in the chat box, good। So here
R4, it is V4 is equal to I2 into R4, and it is how much? Now I2 is 0.8 and R4 is 25. So 25 it's a 200, point is after one digit, so answer will be here 20 volt here. So you can see here it is 20 volt and here it is 4 volt R3 main. So again sum is here how much? 20 plus 4, 24. Same here 8 plus 16 is 24. So potential difference across this combination, because it is in parallel, it remains same, that is 24 volt here. So R4 भी हमारा कितना आ गया? This is how much? 20 volt here. And sum of these two is again 24. Here it is again 24. So this is a very good question, and I'm sure you must have enjoyed. And you can practice more questions of this type at home. Just note down and take it as a very important question, not only for board exam, term 2, for competitive exams also. So this is the second question here. For the given circuit diagram, find equivalent resistance of the circuit and then the ammeter reading. Ammeter की reading कितनी होगी? हमने यहाँ पे ये नहीं पूछा कि what is the total amount of the current passing through the circuit. So here the question has been asked in the form that what is the ammeter reading? Ammeter reading means amount of current passing through the circuit, total amount of the current, right? Because ammeter is used to measure the magnitude of the current passing through a circuit. फिर हमको फाइंड करना था वैल्यू ऑफ करंट इन ईच रजिस्टर. हर रजिस्टर में करंट कितना होगा? तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन, ओके, जस्ट नाउ. तो ये थोड़ा सा यस मिलता जुलता क्वेश्चन है, एंड आई एम श्योर सम ऑफ यू मस्ट हैव स्टार्टेड डूइंग इन द नोटबुक, बिकॉज़ अगेन आई रिपीट माय सेंटेंस, व्हेन यू डू ऑन योर ओन, व्हेन यू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन योर ओन, यू लर्न मोर. ओके, तो जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको क्वेश्चन को, एंड फिर अपनी नोटबुक में करना शुरू करिए विदाउट रेजिंग योर आईज. ओके, खुद करिए, जहां प्रॉब्लम हो वहां उसको देख लें कि कैसे हमको सॉल्व करना है. ओके, सो गिवन टू फाइंड लिख लेंगे. ड्रॉ द डायग्राम इन द नोटबुक. इसमें देखिए इट इज पॉजिटिव, हियर इट इज पॉजिटिव. समटाइम यू कैन बी आस्क्ड टू करेक्ट द डायग्राम, रीड्रॉ द डायग्राम. कई बार ऐसा होता है कि ये आपको दे दिया पॉजिटिव और ये दे दिया नेगेटिव, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि what is the mistake in the diagram, okay, and redraw the correct diagram. So you have to practice this also. Okay, this is negative, positive, तो ये गलत है. ये होना चाहिए हमारा positive and ये होना चाहिए हमारा negative. So this is the correct. So now let's start the question. So there are how many resistors? 3. 1, 2, 3. And here current जो है इसमें हमें find करना है I. तो I current हमको find करना है. And then that current is divided into how many parts? 3 parts. So this is I1, and here it is I2, and here it is I3. So current here, total current is divided into 3 parts. According to the need of the resistor, the current is being withdrawn. Okay, or it is being distributed. Yes? So now first we find A part, equivalent resistance of 3 resistors. So these are in parallel. So therefore हम क्या करेंगे? लिखेंगे 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. And here 1 upon RP, 1 upon R1 is 12, 1 upon 18 plus 1 upon 24. So now find the LCM of this. Okay, इनके LCM find करिए. Yes, quickly find out. So what is the LCM here? Yes, the LCM is 72. So it will be 12 6 6 plus 18 4 plus 24 3 Okay, तो ये आ गया हमारा. देखिए, now therefore 1 upon RP is equal to 6 plus 4 12 plus 3 13. So it is 13 upon 72. Again you have to remember, ये आंसर नहीं है अभी हमारा, RP ये नहीं है हमारा. So this is 1 upon RP. So we have to get RP. So therefore RP जो होगा इसका रेसिप्रोकल होगा. This is 72 upon 13. So this is very important point.
यहाँ पर generally this I have seen generally this mistake is done by the student, so it is very important point here. Okay, ये stars हमने mark कर दिया है. You have to see the difference. So RP is 72 upon 13. Okay, so now we shall find out the value of 72 upon 13. What is the value? Just find out. Hurry up. So when we solve it, what do we get here? हमारा आंसर आता है 5.54 ओम. ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया. So हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है 5.54 and 5.54 you can see it is smaller than 12, it is smaller than 18 and it is smaller than 12 also. Okay, so this means it is smaller than the smallest resistor. Here it is 12 ohm used. Okay, so this means it is correct. Now what we have to find out? The ammeter reading. हमको ammeter reading find करनी है ना? तो हम इसको second part लिखेंगे. So we shall write down here B. Ammeter reading. Ammeter reading. हमको current find करना है ना? Ammeter reading means current. So ammeter reading current हमारा I होगा and this is equal to V upon R. So V is given 6 volt, R हमने निकाल लिया, this is RP. So here it will be how much? V is 6 upon 5.54. So we can solve it. इसको हम solve कर लेंगे और find कर सकते हैं ना. So एक तो मेथड ये है ऐसे find करने. और what we can write down 6 upon इसको पूरा को लिख लिया ना. तो 72 upon 13 and it will be 6 into 13 upon 72. तो चाहे तो आप इसको ऐसे कर लें. ठीक, तो now solve it and get the value of ammeter reading. Okay, done. Solve कर लिया आपने? Yes. So here its value is ammeter reading I. It comes out to 1.08 ampere, or we can write down it is 1.1 ampere. Okay, because 8 is greater than 5, so we can write down 1.1 ampere. Or we can leave 1.08 ampere. Okay, so this is the ammeter reading. So here इसको भी हमने बॉक्स में कर दिया. ऐसे in exam you can just you will be writing with blue pen, तो इसको black से बॉक्स कर देंगे. So this is the ammeter reading I 1.08 ampere. So now this is the total current. Now we have to get the current I1, I2 and I3. So this means ये जो current है 1.08 ampere का current total current, it will be divided into how many parts? 3 parts. 3 parts में divide होगा और हमको each part को find करना है. Okay, current I1, I2, I3. So now let's start the third part. So now third part. So first में करेंगे current in R1. R1 is 12 ohm. इसको हम लिख देते हैं this is R1. This is R2 and this is R3. तो करंट इन R1 कितना होगा? This is I1 is equal to V upon R. V is how much? 6. It is 6 upon 12 and it is 6.12 means कितना आ जाएगा? Yes, it is 0.5 ampere. Because 6 to the 12, 1 upon 2. 1 upon 2 means yes, 0.5 ampere. Similarly, current in R2 and this is I2. Yes, how many of you are doing? Okay. So जल्दी से हमसे पहले करिए इसको and then find the sum of these three currents. जो I1, I2, I3 का जो sum होगा उसको find करिए और देखिए कि that is equal to the ammeter reading or not. करिए. So I2 is again V upon R लिखेंगे. This is R2 now. This is R1. So here it is going to be 6 upon 18. And here it is 1 upon 3. 1 upon 3 means how much? 1 upon 3 का मतलब कितना होगा? This is 1 upon 3. ऐसे भी हम लिख लेते हैं. And this is equal to 1 upon 2 ampere. इसको ऐसे भी लिख देते हैं. So if you leave the answer here, it is also correct. 1 upon 2 भी अगर आप एग्जाम में छोड़ देते हैं तो this is also correct. 1 upon 3 is also correct. So 1 upon 3 means it is 0.33 ampere. Now
current in I3, R3. This is I3 is equal to V upon R3. So now you can see V is same because it is parallel combination. So potential difference is equal to the applied potential difference. So V is same. So here again it is 6 upon 24. So 6 upon 24 means 1 upon 4 equal to how much? 1 upon 4 means 0.25 ampere. Okay, 0.25 ampere. So now we have got three currents, I1, I2 and I3. तो देखिए हमारा ये आ गया हमारा वैल्यू I1 का, this is I2 and this is I3. अब तीनों को सम करके देखते हैं. What is the sum of these three currents? तो इनका सम करते हैं हम. देखिए ये आता है I is equal to I1 plus I2 plus I3. And here what do we get here? 0.5 plus 0.33 plus 0.25. इनको ऐड करें हरियो, कितना आएगा देखिए. Yes, Hariyo, find out. Yes, sum किया. Yes, how many you have got the sum? आया sum आपका? Yes, good. तो sum कितना आएगा? 1.08. जितना पहले केस में करंट था उतना ही करंट इसमें अभी आ रहा है. देखिए ऐड करते हैं इसको. So here 0.5 and 0.3 and this is going to be 8 3 plus 0.25 and here इसको सॉल्व करेंगे तो 5 and 3 8 and 8 and 2 10 and point is after 2 digits. So here 1.08 ampere. तो देखिए यही हमारा टोटल करंट था. तो टोटल करंट 1.08 is divided into 3 parts, 0.5, 0.33 and 0.25. So here you have checked the answer also. आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं, आपने आंसर भी चेक कर लिया. So this way you can solve the numericals. So it's another very good important numerical. So solve it. Hurry up. Yes, done. Now try to make a new numerical. एक दूसरा numerical बनाने की कोशिश करिए. ठीक है? इसकी वैल्यू चेंज कर दीजिए and try to find out the numerical. Yes. Okay. Now let's do the next question. So now next question number 3. It is diagram based question. So you have to draw here a schematic diagram of the given circuit. Conditions आपको दे रखी हैं, क्या-क्या इसमें ऐड करना है हमको. Then you find the ammeter reading. Ammeter का reading find करते हैं. Ammeter reading means yes total current in the circuit है ना. Total current in the circuit here. और अगर हम इसमें बैटरी यूज कर रहे हैं है ना, सिंपल बैटरी यूज कर रहे हैं तो अमीटर कौन सा होगा? डीसी और एसी अमीटर. यस, डीसी अमीटर होगा बिकॉज बैटरी यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट यूज कर रहे हैं तो अमीटर भी जो होगा हमारा डायरेक्ट करंट मेजर करने वाला अमीटर होगा. दैट इज कॉल्ड डीसी अमीटर. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. गिवन आप लिख लेंगे गिवन एंड टू फाइंड. प्लीज डू राइट गिवन एंड टू फाइंड बिकॉज आपको बोर्ड एग्जाम में अगर सॉल्व नहीं भी कर पाते हैं गिवन एंड टू फाइंड करने का भी एटलीस्ट हाफ मार्क इज गिवन. ओके, सो नाउ ड्रॉ द डायग्राम. तो देखिए विथ 5 बैटरीज, 5 बैटरीज ईच ऑफ 2 वोल्ट. तो हम इसमें शुरू करते हैं. तो दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव 1 हो गया हमारा. देन दिस इज अनदर बैटरी, 2 बैटरी हो गया. दिस इज third, now okay, fourth, now it is fifth. So 1 2 3 4 5 batteries हो गया हमारा है ना. And each is of how much? 2 volt. Each is of 2 volt. तो total potential कितना होगा? 2 volt into 5 is equal to 10 volt. Each is of 2 volt. Any problem here? So now what we have to do? We have to connect a switch also. तो switch हमें कनेक्ट करना है तो हमने इसको एक्सटेंड किया and here we can connect a switch here. तो ये हमारा switch हो गया देखिए. And after that what we need to connect? ammeter भी ऐड करना है ना. तो ammeter को ऐड करना है तो ammeter हम इधर लगा सकते हैं. This is ammeter here and it should be negative and it is positive. Correct or not? No sir, no, it is not correct.
here it should be positive, it should be negative, because जब ammeter जोड़ते हैं तो positive of ammeter is connected to positive of battery and here it is negative. Okay, now next step चलते हैं. Now how many resistors are there? 2 resistors, 5 ohm and 10 ohm. तो हमने 5 ohm resistor ज्वाइन कर दिया इसमें. देखिए, this is 5 ohm resistor and then दोनों resistor कैसे हैं? सीरीज में है. ओके, सो इसमें सीरीज में ये भी आ गया हमारा. यस, दिस इज R1 एंड दिस इज R2. एंड क्या है देखिए, वोल्ट मीटर भी ऐड करना है. तो वोल्ट मीटर विल बी कनेक्टेड अक्रॉस रेजिस्टर्स. इनके रेजिस्टर्स के साथ में लगाना है वोल्ट मीटर. तो वोल्ट मीटर को हमने यहां ज्वाइन कर दिया. दिस इज वोल्ट मीटर V एंड हियर यस yes, and now it is connected to this side. तो ये हमारा सर्किट देखिए पूरा हो गया. सर्किट डायग्राम इज कंप्लीटेड हियर. एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. दिस इज द कन्वेंशनल करंट हियर एंड इट इज नेगेटिव. तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा. एंड नेगेटिव ऑफ अमीटर इज अगेन कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ बैटरी. एनी प्रॉब्लम हियर? एंड R1 एंड R2 एज पर द क्वेश्चन दीज आर इन सीरीज. तो यू हैव टू राइट डाउन हियर. इसको लिख देंगे वोल्ट मीटर, resistor R1, here it is ammeter, here it is battery. You have to name it also. इनका नाम भी लिख दीजिएगा. Hurry up. Done. Now we have to find out ammeter reading. So find करिए ammeter reading. Okay, done. Yes, yes, some of you have done. Okay, good. तो आप लोगों में से कुछ बच्चों ने क्वेश्चन ये कर लिया है. तो इसमें फाइंड करते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना. तो इसमें फाइंड करेंगे total potential difference V is equal to across the circuit. How many batteries are there? 5. तो हम लिखेंगे 5 and each is of 2 volt. तो यहाँ पहले लिखेंगे 2 volt को. 2 into 5 is equal to 10 volt. ठीक, half mark we have got here. Now we have to find out ammeter reading. तो करंट तो ammeter में से होके जाएगा. Okay, so now second part इसमें ammeter reading. ammeter reading क्या होगा? I. and this is equal to, फार्मूला यूज करेंगे वही ohms लॉ का. I is equal to V upon R. V is how much? 10 upon R हमने निकाला नहीं है ना. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाला नहीं. तो ये कितना? 5 ohm and 10 ohm है. One is of 5 ohm, another is of 10 ohm. So this is 5 ohm and this is of 10 ohm. तो इससे पहले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड करना होगा. तो हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ओके, दिस इज RS. सीरीज में है दोनों. RS is equal to R1 plus R2 and here it is how much? 5 ohm and 10 ohm. So this is 5 plus 10. कितना आ गया? Yes, 15 ohm. Okay, 15 ohm आ गया equivalent resistance. Now we have to find out I. तो ये फार्मूला आ गया. Therefore, I is equal to V is how much? This is V upon R. Ammeter reading V is 10 upon 15. तो 10 upon 15 हमारा कितना आ गया? इसमें करंट आ गया. तो 10 upon 15 is the amount of current passing through the circuit. So current is 10 upon 15. अगर आप एग्जाम में इतना भी लिख देंगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. और वी कैन फाइंड आउट, अगर समय है तो हम लिख देंगे इसको 0.67 एम्पियर. 0.67 एम्पियर. Okay, so if you are leaving answer 10 upon 15 in exam because of the shortage of time, so no need to worry. You are not going to lose any mark. कोई भी नंबर आपके कम नहीं होंगे. Okay, so note down quickly. Yes, done. So ऐसे ही क्वेश्चन खुद करिएगा. Now find out what is the value of V. अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ लें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V. वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना होगा? एनी वन ऑफ यू? वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना होगा?
यू नीड टू कैलकुलेट और बता सकते हैं ऐसे ही बिना कैलकुलेशन के? यस, बिना कैलकुलेशन के बता सकते हैं। सो वोल्ट मीटर रीडिंग कितना होगा? दिस इज 10। 10 है तो देखिए 10 ही रीडिंग आएगा। ट्राई टू सॉल्व इट, करने की कोशिश करिए। ओके, हम करें। ओके, सो हियर वोल्ट मीटर रीडिंग कैसे निकालेंगे देखिए। वोल्ट मीटर रीडिंग सिंस V इज इक्वल टू IR, ये होता है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट I जो है टोटल करंट सर्किट में कितना है देखिए। टोटल करंट इन द सर्किट इज 10 अपॉन 15। So here we can write down 10 upon 15 into R1 and R2. These two are in series. So इनका equivalent resistance कितना हो जाएगा? 10 plus 5, 15. तो यहां पर हम लिखेंगे equivalent resistance is 15 and here 15, 15 cancel and what do we get? 10 volt. So here potential difference or we can say voltmeter reading कितना आ गया हमारा? 10 volt आ गया. Okay? ये क्वेश्चन बुक में नहीं था ऐसा, तो ये हमने थोड़ा चेंज कर दिया. Right? Any problem? I'm sure all of you must have enjoyed this session also, and do practice some questions at home. Next session में भी हम न्यूमेरिकली करेंगे बिकॉज ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे. देन आपको दिया होगा कि अलग अलग रजिस्टर्स हैं, दे आर इन पैरेलल एंड इन ईच यू हैव टू फाइंड आउट द करंट. ठीक है, और you will be asked to draw the circuit diagrams also. So enjoy, and again, because we are learning not to earn. Learning means not earning only. Learning means to make this world beautiful. So we are learning, we are gaining knowledge to make this world beautiful. We have to make environment beautiful. Okay. सो ये हमें गॉड ने इतना सुंदर एनवायरनमेंट जो दिया है, इसको हमें पॉल्यूट नहीं करना है. ओके, इसको सेव करके रखना है, इसको सुंदर बना के रखना है, स्वच्छ बना के रखना है फॉर जनरेशंस टू कम. ओके, सो इट्स द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट कंटिन्यू टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज एंड डोंट पॉल्यूट दिस मदर अर्थ. ठीक है, यस, कम से कम ये काम हम फ्री कर सकते हैं. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.